दोस्तों जानते हैं 1997 में रिलीज़ हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म कोयला के बारे में, जिसको डायरेक्ट करा और साथ साथ प्रोड्यूस को रिटन पार्ट तीनों ही किरदार निभाए थे राकेश रोशन ने। या बोला जा सकता है तीनों ही जो मेजर पार्ट रहते हैं फिल्म के निभाए गए थे बाय राकेश रोशन। स्टारिंग में रहे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी जो कि मेन लीड में देखे गए। तो वहीं जॉनी लीवर, अशोक सराफ, सलीम घोष, दीपशिखा और हिमानी शिवपुरी नजर आई थी सपोर्टिंग रोल में। मोनीश बहल भी रहे थे स्पेशल अपीयरेंस में इन द फिल्म। फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड रिलीज करी गई थी ऑन 18 अप्रैल 1997 में और बॉक्स ऑफिस पे डिक्लेयर हुई थी एक एवरेज फिल्म के तौर पे। ग्रॉस रहा ओवर 28.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट द बजट ऑफ 11.90। हालांकि क्रिटिक्स ने जो है प्रेज करी थी एक्शन सीक्वेंसेस जो कि परफॉर्म करी गई थी बाय शाहरुख खान और साथ ही इमर्ज हुई थी एज द 8th मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ 1997 इन इंडिया। कुछ सीन्स फिल्म के रहे जो कि शूट करे गए थे अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की कि आखिर क्या प्लॉटिंग रही है, तो एक हैंडसम बट म्यूट शंकर जो कि रेस करे गए थे बाय पावरफुल राजा, जिसके लिए शंकर लॉयल भी था, बट ही ट्रीट्स हिम लाइक अ स्लेव। और जो शंकर था ऑल्सो अननेसेसरीली मारा जाता था बाय राजा's ब्रदर ब्रिजवा जो कि एक वायलेंट साइकोपैथ था। Ruthless or cruel man with a large appetite for young women, Raja kills anyone who dares to defy him. राजा sees गौरी जो कि एक खुश और innocent villager थी and wishes to marry her. However, she wants to see a photo of her future husband first. Aware that she would instantly reject him, he sends her a photo of शंकर, जिसको देखते ही गौरी जो है तुरंत मान जाती है शादी के लिए और शादी की जो तैयारियां होती है वो प्रोसीड कर जाती हैं। However, before the ceremony is completed, she discovers that शंकर isn't her groom और बेहोश हो जाती है। राजा जो है जो पंडित होता है उसे ऑर्डर देता है कि वो जो रस्में हैं उसे कंटिन्यू रखें और जो मैरिज है वो इनवैलिड है while गौरी is unconscious. When she regains consciousness, she sees Raja trying to consummate with her and is shocked knowing they are married. He imprisons and tortures her much. गौरी जो कि ट्राई करती है सुसाइड करने का बट शंकर बचा लेता है, accuses him for ruining her life, but upon knowing his innocence, thanks to the son of Raja's doctor who sometimes serves as his interpreter. And she is sorry when Gauri's brother Ashok comes to see her. राजा जो है धमकाता है उसको to lie him that she is happy otherwise he will kill Ashok. तो उसी तरीके से गौरी जो है आगे फर्दर एक्ट करती है कि वो खुश है। However, Shankar reveals the truth to Ashok by writing in the dirt. Raja or Birjwa kill Ashok, who returned to rescue Gauri. Moments before dying, he has Shankar promises him to save Gauri. She and Shankar flee Raja's mansion. Enraged Raja begins a murderous search to find Gauri and Shankar. After a long chase by jungle, mountains, Shankar uses his survival skills to kill Raja's men, and Raja and his men leave due to being disadvantaged. During this, Gauri and Shankar begin to fall in love. Unexpectedly, Raja, who is back with reinforcements, sees and captures them by shooting Gauri in the arm. Shankar is brutally beaten by Birjwa and a corrupt DIG, and Raja slits his throat, then leaves him to die in the mountains.
and Gauri is sold to a brothel after Raja discovers she loves Shankar. तो वहीं Bindya saves Gauri from what had been done to her. To stop her from doing so, Birjwa humiliate करता है public में before stabbing her with a knife. Shankar is found and saved by a village boy who brings him to and his grandfather जो कि एक healer होता है who operates on his throat while he is still unconscious. The healer, who discovers that Shankar is not mute by birth, is able to repair some of the damaged nerves in Shankar's throat, enabling him to speak. While recovering, Shankar recalled करता है that when he was a boy, his father discovered diamonds in the coal mine. However, he and his wife were murdered in front of Shankar by two mysterious men. When young Shankar threatened to tell his parents' colleagues what they did, someone came up from behind him and shoved hot coals into his throat, rendering him mute. Raja, who had known Shankar's parents, ordered the police to kill those men, but unknown to everyone, Shankar, including the police, led by the DIG, only pretended to kill the men while Raja adopted Shankar. Shankar recover करता है और return हो जाता है. First he fights and kills Birjwa and is reunited with Gauri after rescuing her from the same men that killed his parents and bought Gauri from the brothel, killing one of the men in the process. तो वही साइमल्टेनियसली शंकर डिस्कवर करता है दैट राजा वॉज द पर्सन who made him mute and who ordered his parents to be killed so he could steal their wealth. In the meantime, दोनों reunite हो जाते हैं with Raja's doctor and son who believed him dead. गौरी की हेल्प से he kills Raja's other henchmen and then reveals the crimes of Raja to Raja's coal miners, at which Gauri arrives with her uncle and aunt, forcing them to admit their involvement in making her marry Raja. When Raja's doctor and his son turn against Raja, notifying everyone that Raja not only deceived Gauri but has been responsible for numerous killings as well as rapes before ordering everyone to throw rocks at him and his men, although Raja is able to shoot a few of the workers as well as his doctor in the arm. एक chaos हो जाता है. DIG scares everyone away by throwing grenades but is killed by Shankar, who then chases and finally manages to fight and corner Raja, जो बेग करता है अपनी लाइफ के लिए, trying to give Shankar reasons for why he should live by pointing out that he adopted him and saved his life. But Shankar जो है disregard कर देता है this by counterpointing that Raja had adopted him to make him a slave, and after dodging a pickaxe thrown at him by Raja, kills the evil man by spilling oil and coal around Raja and throw that, setting him on fire with a burning rock. At last शंकर और गौरी embrace करते हैं एक दूसरे को और फाइनली एक शांति की जो जीवन है वो आगे व्यतीत करते हैं. बात की जाए प्रोडक्शन की तो जो डेवलपमेंट था फिल्म का, राकेश रोशन got the idea of making Koyla when he was shooting for his another directorial venture and which was delayed since 1992 और फाइनली रिलीज हुआ था 2000 में, जिसका टाइटल था कारोबार द बिजनेस ऑफ लव, जो कि फिल्म एक स्टोरी बताती है सिंपल हार्टेड विलेज गर्ल की हु फॉल्स इन लव with her torturing husband's mute servant and how the mute man takes revenge against his boss. तो वहीं कास्टिंग की बात की जाए तो he approached Sunny Deol for the role of Shankar after watching the latter's action scenes in the 1996 films Jeet, Ghatak
but due to unknown reasons, Sunny Deol rejected the role. Upon his refusal, the role was offered to Shahrukh Khan, who had worked with Roshan in his films that were King Uncle, जो कि 1993 में रिलीज हुई, करण अर्जुन in 95. तो वहीं सोनाली बेंद्रे was Roshan's first choice to play the role of Gauri. Later replaced her with Madhuri Dixit. For unknown reasons, the film marked the second collaboration between Khan and Dixit, जो कि following में थी अंजाम के, after which they also starred in दिल तो पागल है, हम तुम्हारे हैं सनम and देवदास. Filming that principal photography of Koyla began in June. A song of the film Tanhai Tanhai and some of the scenes were shot in Tawang. Other scenes were also filmed in Hyderabad and south areas of. इसी के साथ साथ शूटिंग के दौरान फिल्म का एक काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था घूंघटे में चंदा. खान fractured his leg and the other song of the film देखा तुझे तो was to be therefore excited from the film because of his fracture, but after Khan's leg got fully well, the song was shot. The sound of real pots were used for the background music of Dekha Tujhe To, or scenes of the film was loosely inspired from the 1994 Hollywood film Forrest Gump से. अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का जो नॉमिनेशन था वो मिला था अमरीश पुरी को. ओवरऑल जो कोयला का ग्रॉस रहा था इन इंडिया दैट अराउंड 2.14 करोड़, इन अदर कंट्रीज फॉर अ वर्ल्ड वाइड टोटल 28.05 करोड़ रहा against its 12 crore budget and had a worldwide opening weekend of 5.39 crore. तो वहीं ग्रॉस में था 9.60 करोड़ इन इट्स फर्स्ट वीक. इसी के साथ ओवरसीज में बोला जाए वर्ल्ड वाइड में 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही थी 1997 में वर्ल्ड वाइड. तो वहीं इंडिया में इट ओपन ऑन फ्राइडे 18th अप्रैल 1997 में अक्रॉस 275 स्क्रीन्स पर ओपन अप हुई थी और रिकॉर्ड रहा था 4.06 करोड़ का नेट में and shared the record for the highest opening day. The previous record opening Trimurti, which also grossed 1.06 crore on its opening day. काफ़ी अच्छा जो है कलेक्शन रहा है फिल्म का देखा जाए तो वहीं साउंड ट्रैक दैट वाज तन्हाई तन्हाई वाज संग बाय अलका याग्निक, उदित नारायण. बदन जुदा होते हैं वाज संग बाय कुमार सानू, प्रीति सिंह, फाल्गुनी पाठक. देखा तुझे तो वाज संग बाय कुमार सानू, अलका याग्निक. एंड सासों की माला पे वाज संग बाय कविता कृष्णमूर्ति, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है इंडस्ट्री का. भांग के नशे में वाज संग बाय अलका याग्निक, आदित्य नारायण. घूंघटे में चंदा है वाज संग बाय उदित नारायण. जो कि देखा तुझे तो सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था अपनी रिलीज़ के बाद. और थीम सॉन्ग जो कि क्रेडिटेड फ्रॉम द मूवी था वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज को लेकर. तो दोस्तों बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की और उनके किरदारों की. शाहरुख खान नज़र आए थे एज शंकर इन द लीड, तो वहीं माधुरी दीक्षित एज गौरी. अमरीश पुरी रहे एज राजा साहब द मेन एंटागोनिस्ट. रंजीत एज दिलावर. सलीम गौज एज ब्रिजवा. दीपशिखा नागपाल एज बिंदिया. अशोक सराफ एज वेदजी. जैक गौर एज रणबीर. सुरेश चटवाल एज गौरीज अंकल. मोनीश बैल एज अशोक.
यानी कि जो गौरी के ब्रदर का किरदार निभा रहे थे, एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। राम मोहन शर्मा एज ओल्ड मैन, कुनिगा एज रसीली, हिमानी शिवपुरी एज चंदाबाई, विकास आनंद एज हरिया, प्रदीप रावत देखे गए पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाते हुए। दोस्तों, बात की जाए ईयर 2000 से लेकर 2006 तक की, तो इन 2000 ही स्टार्ड इन द प्रियदर्शन्स डायरेक्टेड कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी alongside परेश रावल एंड सुनील शेट्टी। हालांकि फिल्म वॉज अ रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग, जो कि कमर्शियल सक्सेस प्रूव हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, और एक टर्निंग पॉइंट भी प्रूव हुआ अक्षय कुमार के करियर में, जिसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स नोटेड द फिल्म्स इंटेंस पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमैनिटी of the human condition. Also starred in the Dharmesh Darshan's directed romantic drama film Dhadkan उसी साल, and the film performed moderate at the box office, but his acting was praised by critics and reviews. Reviews के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक रहा है for the Akshay Kumar, and stated that he had proved that he is director's actor and that he has worked hard on his role is apparent. Same year, he performed some of his most dangerous stunts in Neeraj Vora's directed action thriller film खिलाड़ी 420, जहाँ पे कि उन्होंने क्लाइम करा था रनिंग प्लेन and stood on top of the plane flying 1,000 feet in the air and jumped from the plane onto a hot air balloon. In a later scene, he is also seen being chased by a car, dodging bullets, jumping off buildings and climbing walls. काफ़ी ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी रहे हैं, एज पर उनकी काफ़ी सीरीज़ भी रही हैं जिसमें कि लीड एक्टर रहे हैं खिलाड़ी फिल्म्स के। His character in the film had two names and his role received mixed reviews. तो वहीं सुकन्या वर्मा wrote negative roles and Akshay Kumar don't go hand in hand. He is ridiculously over the top and irritating to the core. However, he manages a decent performance as the sober and sob Anand. पद्माराज नायर, जो कि स्क्रीन के हैं, उन्होंने बिलीव दैट इट वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर। हालांकि एज पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी के बिहाफ पे सेम एस्पेक्ट पे काफ़ी अक्षय कुमार को पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिले हैं, तो कहीं सेम मूवीज़ के लिए नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिले हैं। पर जो पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं वो नेगेटिव पर हावी भी देखे गए हैं। His first release in 2001 was Sunil Darshan's directed drama film Ek Rishta, The Bond of Love, and he was praised for his performance in the film. Next year, he played a negative role in the Abbas Mustan directed film Ajnabi. While reviewing the film for Rediff.com, Sarita Tanwar termed Kumar the surprise package of the film. She also added that he was in total control as the bad guy. The film won him first Filmfare Award for Best Villain and IFA Award 2002 for Best Performance in a Negative Role. तो वहीं पहली रिलीज 2002 की उनकी रही थी धर्मेश दर्शन डायरेक्टेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म दैट वाज हाँ मैंने भी प्यार किया, जिसमें कि उन्होंने रोल प्ले करा था
as a blind man in Vipul Amritlal Shah और शारंगदेव पंडित डायरेक्टेड हिट फिल्म आंखें। को स्टार रहे थे उनके साथ अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, सुष्मिता सेन, आदित्य पंचोली, परेश रावल। बात की जाए उनके को स्टार्स की तो मैक्सिमम फिल्म्स उनकी रही हैं परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ, जो कि ये ट्रायो काफ़ी ज़्यादा पसंद करा गया था ऑडियंसेस के बीच और काफ़ी डायरेक्टर्स भी अप्रोच कर रहे थे ट्रायो के लिए। His performance in the film was critically acclaimed. Later then, he starred in the Vikram Bhatt directed comedy film Avara Pagal Deewana, जिसमें Rediff.com review of the film mentioned that his sincerity and intensity seen in Hera Fairy Ek Rishta, the bond of love and Aake seems missing. His last film of the year was Rajkumar Kohli directed supernatural horror film Jani Dushman Ek Anokhi Kahani alongside Manisha Koirala, Sunil Shetty, Sunny Deol, Aftab Shivdasani, Arshad Varsi, Aditya Pancholi and along with Arman Kohli also. Film was the remake of Kohli's former film Nagin and received mostly negative reviews from critics. सिर्फ ये नहीं, in 2004 he starred in Rajkumar Santoshi's action drama thriller film Khaki alongside Amitabh Bachchan, अजय देवगन एंड ऐश्वर्या राय, जिसमें कि उनका किरदार रहा था इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, जो कि करप्ट मॉरली बैंकरप्ट कॉप का किरदार था, who changes himself during a mission to transfer an accused Pakistani spy, Dr. Iqbal Ansari, played by Atul Kulkarni, from a remote town in Maharashtra to Mumbai. The film and Kumar's acting were positively reviewed by critics. He was nominated for the Filmfare Best Supporting Actor Award for his role in the film. तो वहीं उनकी कुछ और रिलीजेस रही, इंक्लूडिंग दिलीप शुक्ला's crime film Police Force and Side Story. He starred alongside Raveena Tandon, Amrish Puri and Raj Babbar. Film's production was delayed following the breakup of the lead actors that were Tandon and Kumar. Upon release, फिल्म ने नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से. लेटर देन ही प्लेड हरिओम पटनायक, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर का किरदार था, इन मधुर भंडारकर डायरेक्टेड आन मैन एट वर्क में. He starred in David Dhawan directed romantic comedy film मुझसे शादी करोगी alongside Salman Khan, Priyanka Chopra. He played the role of Sunny Sameer, played by Khan's roommate who pursues Rani, played by Chopra, Sameer's love interest. हालांकि फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, तो वहीं तरण आदर्श ने प्रेज भी करी है उनकी परफॉर्मेंस इन द फिल्म. And moreover to this, his other films included Abbas Mustan's directed Aitraz और SM इकबाल की मेरी बीवी का जवाब नहीं. In the former, Kumar played against type as a worker wrongly accused of sexual harassment by his female boss, played by Chopra. According to the directors, Aitraz was inspired by National Basketball Association player Kobe Bryant, who was accused of rape by a fan. And the film's development began when they read about his sexual assault case in the newspapers. Talking about the character, Kumar said that it is realistic and could be described as a new age metrosexual man. He added that Atras was the boldest film he had done. In the later, he starred opposite Sridevi. The film was shot in 1994 but was released in 2004. 10 साल बाद रिलीज हुई थी after his
After the shooting, the next year he starred in Dharmesh Darshan directed romantic drama plus musical film Bewafa opposite Kareena Kapoor and played the role of Raja, an inspiring musician who pursues his love interest Anjali even after she is married to Aditya Sahe. The film received mixed reviews from film critics, but his performance was praised by so my Anupama Chopra of India Today wrote that Kareena Kapoor and Kumar stand out than others who wrote Akshay Kumar does well in the role that fits him like a glove. Later that year, he acted in Vipul Amritlal Shah's family drama film Waqt, The Race Against Time alongside Amitabh Bachchan. Another Priyadarshan directed comedy film Garm Masala alongside John Abraham. वक्त जो कि फिल्म थी was a family drama and the film and Kumar's acting received mixed reviews. तो वहीं विशाल डिसूजा wrote Akshay shoulders an author-backed role, carrying more of the film's emotional baggage, though he is distinctly uncomfortable in the soapy VP scenes. The film succeeded at the box office और उनकी performance later earned him his second Filmfare Award for Best Comedian. उनकी कुछ और फिल्म्स रहीं जैसे कि विक्रम भट्ट डायरेक्टेड एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म दीवाने हुए पागल और सुनील दर्शन डायरेक्टेड रोमांटिक फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर. In the former, he starred alongside Shahid Kapoor, Sunil Shetty, Rimi Sen, while in the later, he starred alongside Kareena Kapoor and Bobby Deol. दोनों ही फिल्म्स ने पॉजिटिव रिव्यूज गेन करे थे. तो वहीं उनकी पहली रिलीज 2006 की थी संतोष राजकुमार संतोषी की डायरेक्टेड फिल्मी फैमिली टाइज ऑफ ब्लड जो कि फॉलो अप रही थी सुनील दर्शन की मूवी मेरे जीवन साथी के साथ और राज कंवर की हमको दीवाना कर गए से. तीनों ही उनकी फॉलोअप में रही. तो वहीं नेक्स्ट सीक्वल रहा था उनका हेरा फेरी टाइटल्ड फिर हेरा फेरी as was the former sequel became a huge success at the box office. Later that year, he starred alongside Salman Khan, Preeti Zinta in the directed जो कि शिरीष कुंदेर डायरेक्टेड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म रही थी जश्न ईमान में जान ईमान में. हालांकि फिल्म जो है वेल एंटिसिपेटेड रिलीज हुई थी एंड डिस्पाइट रिसीविंग पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स फिल्म ने कुछ खास अर्न नहीं करा था बॉक्स ऑफिस पे. काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज उन्हें मिले थे. तो वहीं बात की जाए 2007 की तो till 2011 in the year 2007 proved to be Kumar's most successful year during his career in the industry and as described by box office analysts probably the best ever recorded by an actor with 4 outright hits and no flops. His first release Vipul Amritlal Shah डायरेक्टेड नमस्ते लंदन जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही तरीके से सक्सेसफुल रही थी and his performance earned him a Best Actor nomination at the Filmfare. तो वहीं critic Taran Adarsh wrote of his performance in the film, he is sure to win the hearts of millions of moviegoers with a terrific portrayal in this film. His chemistry with lead actress Katrina Kaif also generated immense appreciation with Nikhat Kazmi of the Times of India describing their appeal as refreshing. तो वहीं his next two releases Sajid Khan directed Hey Baby और Priyadarshan's Bhool Bhulaiya were the box office success as well. दोनों ही फिल्म में he was starred opposite Vidya Balan. His last release of the year that was
अनीस बाज़मी डायरेक्टेड वेलकम, जो कि एक्सट्रीमली वेल रही थी बॉक्स ऑफिस पे, receiving a blockbuster status and simultaneously becoming his fifth successive hit also. All of Kumar's films which released that year did well in the overseas market as well, and Kumar appeared in a cameo role in Farah Khan directed Om Shanti Om. His role was listed as number 3 on the top 10 cameos in Bollywood list of mensxp.com. तो वहीं उनकी पहली फिल्म 2008 की वॉज विजय कृष्ण आचार्य डायरेक्टेड एक्शन थ्रिलर फिल्म टशन, जिसके साथ उन्होंने कमबैक करा था यश राज फिल्म्स बैनर में आफ्टर 11 years. Although Poll named it the most anticipated release of the year, film underperformed at the box office, grossing 279 million in India. तो वहीं उनकी सेकंड फिल्म विद डायरेक्टर बाज़मी वॉज सिंग इज किंग, इन विच ही स्टार्ड अपोजिट कैटरीना कैफ, जो कि एक ह्यूज सक्सेस रही थी बॉक्स ऑफिस पे, एंड इट ब्रोक द फर्स्ट वीक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ऑफ ओम शांति ओम, द प्रीवियस हाईएस्ट फिगर ऑल्सो. 2009 की बात की जाए, he was featured opposite Deepika Padukone in the Warner Bros. And Rohan Sippy production Chandni Chowk to China, that was directed by Nikhil Advani. The film was a critical and commercial failure at the box office. Later then, he was seen in 8 into Tasveer, an action thriller directed by Nagesh Kukunur that failed commercially. His next release was Shabir Khan's Battle of the Sexes, comedy cum Ishq, set in Los Angeles. It was the first Indian film to be shot at Universal Studios and featured cameo appearance by Hollywood actors. The film was poorly received by critics but came an economic success, earning over 840 million worldwide. तो वहीं उनकी नेक्स्ट फिल्म ब्लू, जो कि रिलीज़ हुई थी 2009 में, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ गेन करे हैं, एंड इनकी लास्ट रिलीज ऑफ 2009 वाज दे दनादन, जिसमें कि साथ में नज़र आई थी कैटरीना कैफ, परेश रावल, सुनील शेट्टी, where he played a servant who plans to kidnap his owner's dog. The film received mixed reviews. काफ़ी उन्होंने मिक्स्ड रिव्यूज़ भी गेन करे हैं, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी गेन करे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर. बात की जाए 2011 की, जिसमें कि नज़र आए थे पटियाला हाउस एंड थैंक यू में. His last film of 2011 was Rohit Dhawan's directed Desi Boys, which co-starred Chitrangda Singh, Deepika Padukone and John Abraham. He also co-produced a film with Rizal Peters titled Breakaway, dubbed into Hindi as PD Sings, which is reminiscent of his own Patiala house. Breakaway became the highest grossing cross-culture movie of 2011 in Canada, where he dubbed for the role of Optimus Prime in the Hindi version of Hollywood action blockbuster Transformers Dark of the Moon. He took the dubbing role for his son Arav and did so for free. Whereas 2012 to 15 उनकी पहली रिलीज 2012 की रही थी हाउसफुल 2, जो कि सीक्वल था अर्लियर फिल्म हाउसफुल का. And his next film was Prabhu directed action drama film Rowdy Rathore, in which he played a double role opposite Sonakshi Sinha. The film earned more than 1.3 billion in India. Both of these films grossed over 1 billion at the box office. तो वहीं 2012 में he found another production company called Grazing Goat Pictures Private Limited. Later that year was Khiladi 786,
eighth installment in his famous Khiladi series, as well as the comeback of the series after 12 years. Although the film was spent by critics, it grossed 700 million at the domestic box office. उनका पहला रिलीज 2013 का was Special 26, which earned a positive critical reception and was moderately successful at the box office. Although the movie earned him positive reviews and commercial success, trade analysts noted that the movie could have done much better business due to its good content and Kumar's high profile villain. Luthria chose Kumar to play the character of Shoaib Khan in the gangster film Once Upon a Time in Mumbai दोबारा, जो कि सीक्वल था Once Upon a Time in Mumbai का, and it also proved a below average at the box office, and हालांकि बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप डिक्लेयर करी गई थी. It received mixed reviews, however, his acting was praised by majority of critics. In a review for Hindustan Times, Anupama Chopra wrote that Kumar makes a serial killer. Madhuri Mukherjee of the Times of India praised his performance and said that Bhai act with flamboyance and mojo. काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं उनकी फिल्म को लेकर. बतौर अगर फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर करी गई या फिर एवरेज, तो उनकी परफॉर्मेंस प्रेस करी गई थी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पर. तो वहीं एट प्रेजेंट की बात की जाए फ्रॉम 2016, उनकी पहली रिलीज वाज एयरलिफ्ट इन जनवरी 2016, जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही तरीके से सक्सेसफुल रही थी. बात की जाए उनकी कुछ और वर्क्स के बारे में सच एज प्रोडक्शन, तो ही ऑल्सो ओन्स हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी दैट ऑल्सो कॉल्ड हरिओम प्रोडक्शंस, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में. फाउंडर रहे थे कंपनी के अलॉन्ग विद हिज मदर अरुणा भाटिया एंड वाइफ ट्विंकल खन्ना के साथ. हरिओम हैपन्स टू बी द नेम ऑफ कुमार्स फादर. The company, in association with Telefilms Canada, produced a hockey-based Indo-Canadian film, Speedy Sings. तो वहीं बात की जाए उनके कुछ प्रोडक्शंस की, that were Sing is King, directed by Anees Bazmi, खट्टा मीठा, Action Replay, 30 मार खान, पटियाला हाउस, जोकर, ब्रेक अवे, खिलाड़ी 786, वाइट नाइट जो कि डॉक्यूमेंट्री रही थी ऑन द टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, हॉलीडे सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, रुस्तम, पैडमैन, केसरी कुछ उनकी प्रोडक्शन फिल्म्स रही थी. मोर ओवर अवार्ड्स की बात करें दोस्तों, he is recipient of 2 Filmfare Awards from 13 nominations, Best Villain for Ajnabi and Best Comedian for Garam Masala, and a National Film Award for Best Actor for the films Rustam and Airlift, जो कि दोनों ही 2016 में रिलीज़ हुई थी, यानी कि 2016 में उन्होंने गेन करा था. जबकि 2008 में द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर conferred an honorary doctorate of law on Kumar in recognition of his contribution to Indian cinema. Following year, he was awarded the Padma Shri by Government of India. जबकि 2011 में the Asian Award honored him for his outstanding achievement in cinema. तो दोस्तों ये तो जाना हमने अक्षय कुमार से रिलेटेड उनके स्ट्रगल, उनकी करियर की कुछ फिल्म्स के बारे में. जानते हैं करिश्मा कपूर के बारे में, जो कि फिल्म में नज़र आई थी एज पूजा कश्यप. शी इज़ एन एक्ट्रेस जो कि बेसिकली देखी गई हैं हिंदी फिल्म्स में, मेंबर है कपूर फैमिली की. और डेब्यू की बात की जाए तो डेब्यू करा था विद 1991 फिल्म प्रेम कैदी से.
रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स की, जिसमें कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स रहे हैं। Moreover to this, she rose to prominence starring in a number of box office hits जिसमें की है जिगर, राजा बाबू, कूली नंबर वन, साजन चले ससुराल, अनाड़ी, जीत। However, it were her portrayals in the romantic drama Raja Hindustani which won her the Filmfare Award for Best Actress and the musical romance Dil To Pagal Hai in 1997, for which she won the Filmfare Award and the National Film Award for Best Supporting Actress that established her as a leading actress of Hindi cinema, earning her acclaim and a stardom. Whereas she cemented her status by starring in five of David Dhawan's romantic comedies such as Judwa, Biwi Number One, Hero Number One, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, जो कि सब ही सक्सेसफुल डिक्लेयर हुई थी, यानी कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी, एज वेल एज द फैमिली ड्रामा हम साथ साथ हैं इन 1999, जबकि अर्ली 2000 में शी वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस एंड द बेस्ट एक्ट्रेस Critics Award at Filmfare for her titular role in the drama films like Fiza, Zubeda, and garnered praise for her performance in the Shakti, The Power. She took a sabbatical from acting in 2004 and has since acted sporadically, which include the thriller Dangerous Ishq and the web series Mental Hood in 2020. करियर की बात की जाए तो her career started in 1991 and early roles where she started at the age of 17 with the romantic drama film Prem Kaidi opposite debutant actor Harish Kumar. Upon release, the film emerged as a moderate box office success and received mixed reviews from critics, as did Kapoor's performance, with Taran Adarsh of Bollywood Hangama describing it as mechanical. Following year, Kapoor's first five releases, Police Officer, Jagruti, Nishchay, Sapne Sajan Ke and Didar, फ्लॉप रहे थे बॉक्स ऑफिस में।
दोस्तों, उनके करियर की फिल्म्स की बात की जाए तो ही वॉज इंडियन फिल्म एक्टर, जो कि ही हैज़ एक्टेड इन 20 फिल्म्स एज अ सपोर्टिंग रोल रही हैं, जबकि 50 फिल्म्स एज अ लीड एक्टर देखी गई हैं। अप्रॉक्सीमेट 50 नहीं कहा जा सकता, मोर देन 50, या फिर ओवरऑल बोला जा सकता है ओवर 200 फिल्म्स वर पार्ट ऑफ हिज करियर, जिसमें कि कुछ फिल्म्स रही हैं लाइक जीवन ज्योति, जो कि इनकी डेब्यू फिल्म थी, अलॉन्ग विद रेल का डिब्बा, टोंगा वाला, नकाब, मेम साहेब, तुमसा नहीं देखा, उजाला, रात के राही, चार दिल चार राहें, दिल तेरा दीवाना, बॉयफ्रेंड, चाइना टाउन, जानवर, कश्मीर की कली, बदतमीज, एन इवनिंग इन पेरिस, तुमसा अच्छा कौन है, प्रिंस, शालीमार, बीवी ओ बीवी, ये वादा रहा, देश प्रेमी, प्रेम रोग, इजाज़त, हिम्मत और मेहनत, बड़े घर की बेटी, दाता, बंटवारा, मोहब्बत का पैगाम, हीना, अजूबा, मस्त कलंदर, मंगनी, खुलेआम, तहलका, चमत्कार, हम शक्ल, हीर रांझा, आमरन, गर्दिश, शिरडी साईं बाबा में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहे। ये है जलवा भी एज अ गेस्ट अपीयरेंस देखी गई। सैंडविच, रॉकस्टार, जो कि उनकी डेथ के बाद रिलीज़ हुई थी, एंड कुछ टेलीविज़न शोज़ रहे जैसे कि बाइबल की कहानियाँ वॉज वन ऑफ हिज टेलीविज़न शो। अवार्ड्स की बात की जाए तो he was awardee of many awards like Zee Cine Awards, Bollywood Filmfare, Bollywood Movie Star Screen Awards, IFA Awards and Filmfare Awards also, including this कुछ और awards जैसे कि Special Award for his contribution in Indian cinema that contained Kalakar Award, Anandalok Award for Lifetime Achievement Award, लिविंग लेजेंड अवार्ड एंड फॉर हिज राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था। बात की जाए फिल्म के अगले कलाकार की, जो कि थे विजेंद्र घाट के, नज़र आए थे एज दीवान वीरेंद्र नाथ के किरदार में। बॉलीवुड में तो जाने जाते ही हैं, बल्कि टेलीविज़न का भी एक काफ़ी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। नोन फॉर हिज रोल ऑफ Lala Vrishbhan in the TV serial Bunyad that originally aired on DD National in 1986. Among other several serials and films, he is also known for his roles in Chachor, Prem Rog, and more recently Devdas of 2002 and Jankar Beats of 2003. उनके करियर की बात की जाए तो ही स्टार्टेड हिज फिल्मी करियर विद अ सपोर्टिंग रोल इन राष्ट्रीय प्रोडक्शन की 1976 की हिंदी फिल्म चिटचोर के साथ, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय बासु चैटर्जी के साथ, एंड फिल्म वॉज सुपर हिट थिएटर। Thereafter, he did various supporting roles in films like कसमे वादे, तेरे प्यार में, रज़िया सुल्तान, प्रेम रोग, जबकि मिड 1980s में ही बिगेन अपीयरिंग इन टेलीविजन सीरियल्स, एंड जो उनका कैरेक्टर था लाला वृषभान का, दैट ही प्लेड इन 1986 to 87, जो कि क्लासिक सीरियल रहा था बुनियाद, और हर घर का एक नाम हो गया था, यानी कि हाउस होल्ड नेम बन गया था उनका कैरेक्टर। In 2002, he appeared in the Sanjay Leela Bhansali's directed movie Devdas in the role of Bhuvan Chaudhary, the aging husband of the heroine Paro, that the role played by Aishwarya Rai, यानी कि ऐश्वर्या राय के हस्बैंड के किरदार में देखे गए थे इन द फिल्म देवदास।
फिल्म्स की बात की जाए तो चिट्चोर, अगर, इफ, अनपढ़, कस्में, वादे, तेरे प्यार में, सुनैना, शायद, नजराना प्यार का, आखिरी इंसाफ, धनवान, पांच, कैदी, हमसे बढ़कर कौन, ज्योति, हंसते खेलते, महक, काली बस्ती, लॉकेट, मुकद्दर का फैसला, बंटवारा, सौतन की बेटी, बंद दरवाज़ा, आखिरी चीख, सनम बेवफा, एक डॉक्टर की मौत, अपराधी, बेखुदी, दीवानगी, गुड्डू, तुझे मेरी कसम were some of his films, and on television shows like सिंहासन बत्तीसी, विक्रम और बेताल, तलाश, जुनून were some of his टेलीविजन सीरियल्स जो कि देखे गए थे ऑन दूरदर्शन। म्यूजिक की बात की जाए तो अनु मलिक कंपोज द फिल्म्स म्यूजिक एंड राहत इंदौरी ने लिरिक्स लिखे थे। जबकि सिंगर्स की बात की जाए तो द टाइटल सॉन्ग तेरा गुस्सा वॉज संग बाय अभिजीत, चोरी चोरी जब नजरें मिले वॉज संग बाय कुमार सानू एंड संजीवनी, चुरा लो न दिल मेरा वॉज संग बाय कुमार सानू एंड संजीवनी अगेन, रात यही जग की वॉज संग बाय जसपिंदर नरूला एंड संजीवनी, हाँ जुदाई से डरता है दिल, दोनों ही पार्ट यानी कि पहला पार्ट गाया गया था बाय कुमार सानू जबकि नेक्स्ट पार्ट वॉज संग बाय संजीवनी। चोरी चोरी किस्मत ने आवाज़ दी वॉज संग बाय कुमार सानू एंड संजीवनी, तुम जुदा होकर हमें वॉज संग बाय रूप कुमार राठौड़ एंड संजीवनी। काफ़ी सॉन्ग्स पसंद भी करे गए थे ऑडियंस के बीच। एज पर द फिल्म बात की जाए ओवरऑल फिल्म के वर्डिक्ट की, बॉक्स ऑफिस पे तो डिक्लेयर हुई थी एज अ फ्लॉप और बोला जा सकता है बिलो एवरेज रही है, जबकि ऑडियंसेस के बीच कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ रहे लाइक क्वाइट गुड बट कुड बी बेटर, an attractive movie, high level movie, a simple yet touching rendition, romance at its best. Karib is what it tells. In true sense, you should go near it to witness the cutest romantic movie, wonderful love story, and heart-touching emotions painted by director. Excellent, a movie which contains everything जैसे काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ रही हैं ऑडियंस की तरफ से। दोस्तों बात की जाए विधु विनोद चोपड़ा की जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी रहे, स्क्रीन राइटर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे। मोर ओवर टू दिस ही इज़ ऑल्सो एन एडिटर एंड लिरिसिस्ट, ऑल्सो एन एक्टर। वेल ही इज़ वेल नोन फिल्म्स इंक्लूड परिंदर 1942, लव स्टोरी, मुन्ना भाई की फिल्म सीरीज, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एंड शिकारा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ विनोद चोपड़ा फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस। बात की जाए उनके अर्ली लाइफ की बिफोर एंटरिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, ही वॉज बॉर्न एंड ग्रू अप इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर. His father was D.N. Chopra and veteran filmmaker Ramanand Sagar was his half-brother. His father's family originally came from Peshawar, British India, and his mother was Shanti Devi Mahalakshmi, who left Kashmir with him and family after the migration of Kashmiri Pandits due to Kashmir conflict in 1990. He dedicated his movie Shikara to his mother, which is based on the same theme. He studied film direction at the Film and Television Institute of India in Pune. करियर की बात की जाए तो फर्स्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म was Murder at Monkey Hill that won the
National Film Award for Best Short Experimental Film at the Gurudutt Memorial Award for Best Student Film. This was followed by a short documentary that was highlighting the plight of India's destitute children called An Encounter with Faces, which was nominated for an Academy Award in the documentary short subject category in 1979, that it also won the Grand Prix at the Tempe Film Festival in 1980. The Sazai Moth was his first full-length feature film that was an adaptation of his previous short Murder at Monkey Hills. सिर्फ यही नहीं, it starred नजीरुद्दीन शाह, राधा सलूजा and दिलीप धवन. वनराज भाटिया ने कंपोज करा था फिल्म का म्यूजिक, एंड फॉर खामोश उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर रहा था, in which he assembled a cast featuring some of the finest acting talent in India, जिसमें कि शबाना आज़मी, अमोल पालेकर, नज़ीरुद्दीन शाह, Pankaj Kapoor, among others, appeared in prominent roles. तो वहीं परिंदा of 1989 is a landmark film in Hindi cinema. It expanded the orbit of the crime drama and the vocabulary of images used in Hindi films while garnering widespread critical acclaim on numerous awards. Several modern Indian filmmakers have expressed their admiration for and drawn inspiration from Chopra's film, and later then he found his own production company in 1985. Since then, the company has gone on to produce major Bollywood films and is currently one of the biggest and most successful film production houses in India. जिसमें कि Bengali filmmaker Ritwik Ghatak affectionately gave him the name Vidhu. Films की बात की जाए तो ही critically acclaimed films include Parinda, Munna Bhai, Mission Kashmir, Parinita, Three Idiots, जिसमें कि Three Idiots went on to become one of the most successful films in India. And पहली फिल्म बनी थी कंट्री की to cross 200 crore at the box office, and it also found popular appeal in markets like Taiwan and Korea. सिर्फ यही नहीं बल्कि हॉलीवुड डायरेक्टोरियल डेब्यू विद द फिल्म मेकर ब्रोकन हॉर्सेस इन 2015. हालांकि इट रिसीव अ रॉटन टोमेटोज रेटिंग ऑफ 22% एंड वाज कमर्शियल डिजास्टर, only making 60 lakh in its opening weekend. His latest film was Shikara, is a Hindi language historical romance film released on 7 February 2020, marking his return to direction in India after 13 years, and his last directorial feature film was Eklavya The Royal Guard, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में. बात की जाए बुक लिखने की तो ही ऑल्सो रोट अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशन ऑफ ऑन लाइफ एंड सिनेमा, जिसमें कि उनके साथ को राइटर रहे थे अभिजीत जोशी. उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही जैसे कि शिकारा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वजीर, संजू, ब्रोकन हॉर्सेस, फरारी की सवारी, एकलव्य द रॉयल गार्ड, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, जाने भी दो यारो, एनकाउंटर विद फेसेस. अवार्ड्स की बात की जाए तो he has received 1 nomination at the Film Academy Awards, 6 National Film Awards and 5 awards from 14 nominations at the Filmfare Awards, जिसमें कि he contain awards like IFA, Stardust, FICCI, Zee Cine, Tampere International Short Film Festival, Star Screen Awards for his movies like Three Idiots,
मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, एन एनकाउंटर विद फेसेस, मिशन कश्मीर, परिणीता, लाइक फिल्म्स उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी विन करे हैं और नॉमिनेशंस भी। दोस्तों बात की जाए अनु मलिक की, जिन्होंने फिल्म में म्यूज़िक दिया था। ही वॉज एन इंडियन म्यूज़िक ही इज़ एन इंडियन म्यूज़िक कंपोजर, अरेंजर एंड ऑल्सो सिंगर तो है ही। काफ़ी सारे अवार्ड शोज़ भी उन्होंने म्यूज़िक शोज़ भी उन्होंने जज करे हैं। ही इज़ एन इंडियन नेशनल अवार्ड and Filmfare awardee winning musician who primarily composes music for the Hindi film industry। बेटे हैं सरदार मलिक के। बात की जाए उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की, जैसे कि एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर he has composed music for various genres of films and has created several commercially successful songs for the Hindi film music industry। Also known for the use of the tabla in some of his songs, including Taal Pe Jab and Mere Humsafar from the film Refugee and Tumse Milke Dil Ka Jo Haal from Main Hoon Na, Eli Re Eli from Yadein, Bazigar O Bazigar from the film Bazigar, and many more films। He was judge on Indian Idol from its first season that came in 2004 until 2018 when he left after sexual harassment allegations. He returned as a judge for the show in 11th season in 2019 but left after 3 weeks, and he was one of the judges of 4 parts of the 12th season also। कोलैबोरेशन की बात की जाए तो ही हैज़ वर्क विद मेनी इंडियन प्लेबैक सिंगर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, अमित कुमार, किशोर कुमार एंड अदर्स ऑल्सो। जबकि 80s के दौरान मोस्टली वर्क विद सिंगर्स सच एज मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार, मनहार उदास, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश एंड अनवर। He has also worked with Alisha Chennai to compose the commercially successful singles like Sexy Sexy and Ruk 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 from Vijaypat, चोट दिल पे लगी है from Ishq Wish and the songs from Love Story 2050। काफ़ी सारे उन्होंने डायरेक्टर्स के साथ काम करा है एंड काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ उनका कोलैबोरेशन भी रहा है। टेलीविज़न पे बात की जाए तो ही इज़ one of the judges on the television shows Indian Idol since the show's inception in 2004 and the format changed into Indian Idol Juniors in 2013 and he was उन्होंने बीच में शो छोड़ा भी था because of some allegations। Later then he came back and Farah Khan and Malik were the judges for the entertainment के लिए कुछ भी करेगा, a variety entertainment reality show जो कि आया था सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर on weekends and was the only judge from India on Asian Idol who represented Indian Idol winner Abhijit Sawant with other judges that were Indra Lesmana, Paul Moss, Pirita Corrals, Ken Lim and Sue Black। As a singer, although he is not a mainstream singer, he does playback singing written off as a singer in his early days। He continues to sing his own compositions with songs such as Alia Ray from the movie Jung and Janam Samjha Karo from the movie Janam Samjha Karo, एक गरम चाय की प्याली फ्रॉम द मूवी हर दिल जो प्यार करेगा, जो कि काफ़ी फेमस सॉन्ग रहा है उनका। जबकि काफ़ी सारे सॉन्ग्स उनके ऐसे हैं जो अब भी लोगों की ज़ुबान पर है, लाइक ऊंची है बिल्डिंग, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट फ्रॉम द मूवी जुड़वा, द रैप पार्ट ऑफ ये काली काली आँखें ऑफ बाजीगर while he sings entire song for some movies
especially those starring Sunil Shetty, Akshay Kumar, Shahid Kapoor, Paresh Rawal, and in Deewane Hue Pagal he sang almost every song and has also sung as part of chorus in Mehbooba Mehbooba in the film Ajnabi and Tumse Milke Dil Ka Hai Jo Haal in the film मैं हूं ना। अवार्ड्स की बात की जाए तो ही वॉन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म रिफ्यूजी एज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने अवार्ड विन करा था, जबकि वॉज अवॉर्डी ऑफ द फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड फॉर हिज फिल्म बाजीगर, मैं हूं ना एंड रिफ्यूजी। वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड in the movies like Soni Mahiwal, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, विरासत, बॉर्डर, सोल्जर, बीवी नंबर वन, जोश, फिजा, एलओसी, कारगिल, मर्डर। जबकि जी सिने अवार्ड्स में भी उन्होंने अवार्ड विनर रहे थे फॉर द फॉर हिज सॉन्ग दम लगा के हैशा एंड मैं हूं ना, and was also nominated for his many movies like Border, Soldier, BB Number One, Hasina Maan Jayegi, Ashoka, and in Star Screen Awards, he won the award for Mehuna and Star Screen Award Special Tribute as the Artist of the Decade, and many more nominations he was included.
दोस्तों जानते हैं 1997 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म कोयला के बारे में, जिसको डायरेक्ट करा और साथ साथ प्रोड्यूस को रिटन पार्ट तीनों ही किरदार निभाए थे राकेश रोशन ने। या बोला जा सकता है तीनों ही जो मेजर पार्ट रहते हैं फिल्म के निभाए गए थे बाय राकेश रोशन। स्टारिंग में रहे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी जो कि मेन लीड में देखे गए, तो वहीं जॉनी लिवर, अशोक सराफ, सलीम घोष, दीपशिखा और हिमानी शिवपुरी नजर आई थी सपोर्टिंग रोल में। मोनीश बहल भी रहे थे स्पेशल अपीयरेंस में इन द फिल्म। फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड रिलीज करी गई थी ऑन 18 अप्रैल 1997 में और बॉक्स ऑफिस पे डिक्लेयर हुई थी एक एवरेज फिल्म के तौर पे। ग्रॉस रहा ओवर 28.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट द बजट ऑफ 11.90। हालांकि क्रिटिक्स ने जो है प्रेज करी थी एक्शन सीक्वेंसेस जो कि परफॉर्म करी गई थी बाय शाहरुख खान और साथ ही इमर्ज हुई थी एज द 8th मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ 1997 इन इंडिया। कुछ सीन्स फिल्म के रहे जो कि शूट करे गए थे अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की कि आखिर क्या प्लॉटिंग रही है, तो एक हैंडसम बट म्यूट शंकर जो कि रेस करे गए थे बाय पावरफुल राजा, जिसके लिए शंकर लॉयल भी था, बट ही ट्रीट्स हिम लाइक अ स्लेव। और जो शंकर था ऑल्सो अननेसेसरीली मारा जाता था बाय राजा's ब्रदर ब्रिजवा जो कि एक वायलेंट साइकोपैथ था। Ruthless or cruel man with a large appetite for young women, Raja kills anyone who dares to defy him. राजा sees गौरी जो कि एक खुश और innocent villager थी and wishes to marry her. However, she wants to see a photo of her future husband first. Aware that she would instantly reject him, he sends her a photo of Shankar, जिसको देखते ही गौरी जो है तुरंत मान जाती है शादी के लिए और शादी की जो तैयारियां होती है वो प्रोसीड कर जाती हैं। However, before the ceremony is completed, she discovers that Shankar isn't her groom और बेहोश हो जाती है। राजा जो है जो पंडित होता है उसे ऑर्डर देता है कि वो जो रस्में हैं उसे कंटिन्यू रखे और जो मैरिज है वो इनवैलिड है while गौरी is unconscious. When she regains consciousness, she sees Raja trying to consummate with her and is shocked knowing they are married. He imprisons and tortures her much. गौरी जो कि ट्राई करती है सुसाइड करने का बट शंकर बचा लेता है, accuses him for ruining her life, but upon knowing his innocence, thanks to the son of Raja's doctor who sometimes serves as his interpreter. And she is sorry when Gauri's brother Ashok comes to see her. राजा जो है धमकाता है उसको to lie him that she is happy otherwise he will kill Ashok. तो उसी तरीके से गौरी जो है आगे फर्दर एक्ट करती है कि वो खुश है। However, Shankar reveals the truth to Ashok by writing in the dirt. Raja or Birzwa kill Ashok, who returned to rescue Gauri. Moments before dying, he has Shankar promises him to save Gauri. She and Shankar flee Raja's mansion. Enraged Raja begins a murderous search to find Gauri and Shankar. After a long chase by jungle, mountains, Shankar uses his survival skills to kill Raja's men, and Raja and his men leave due to being disadvantaged. During this, Gauri and Shankar begin to fall in love. Unexpectedly, Raja, who is back with reinforcements, sees and captures them by shooting Gauri in the arm. Shankar is brutally beaten by Birzwa and a corrupt DIG, and Raja slits his throat, then leaves him to die in the mountains.
and Gauri is sold to a brothel after Raja discovers she loves Shankar. तो वहीं बिंदिया saves Gauri from what had been done to her. To stop her from doing so, बिरजुआ humiliate करता है public में before stabbing her with a knife. Shankar is found and saved by a village boy who brings him to and his grandfather, जो कि एक healer होता है, who operates on his throat while he is still unconscious. The healer, who discovers that Shankar is not mute by birth, is able to repair some of the damaged nerves in Shankar's throat, enabling him to speak. While recovering, Shankar recall करता है that when he was a boy, his father discovered diamonds in the coal mine. However, he and his wife were murdered in front of Shankar by two mysterious men. When young Shankar threatened to tell his parents' colleagues what they did, someone came up from behind him and shoved hot coals into his throat, rendering him mute. Raja, who had known Shankar's parents, ordered the police to kill those men, but unknown to everyone, Shankar, including the police, led by the DIG, only pretended to kill the men while Raja adopted Shankar. Shankar recover करता है और return हो जाता है. First he fights and kills Birjwa and is reunited with Gauri after rescuing her from the same men that killed his parents and bought Gauri from the brothel, killing one of the men in the process. तो वही simultaneously Shankar discover करता है that Raja was the person who made him mute and who ordered his parents to be killed so he could steal their wealth. In the meantime, दोनों reunite हो जाते हैं with Raja's doctor and son who believed him dead. Gauri की help से he kills Raja's other henchmen and then reveals the crimes of Raja to Raja's coal miners, at which Gauri arrives with her uncle and aunt, forcing them to admit their involvement in making her marry Raja. When Raja's doctor and his son turn against Raja, notifying everyone that Raja not only deceived Gauri but has been responsible for numerous killings as well as rapes before ordering everyone to throw rocks at him and his men, although Raja is able to shoot a few of the workers as well as his doctor in the arm. एक chaos हो जाता है. DIG scares everyone away by throwing grenades but is killed by Shankar, who then chases and finally manages to fight and corner Raja, जो beg करता है अपनी life के लिए, trying to give Shankar reasons for why he should live by pointing out that he adopted him and saved his life. But Shankar जो है disregard कर देता है this by counterpointing that Raja had adopted him to make him a slave, and after dodging a pickaxe thrown at him by Raja, kills the evil man by spilling oil and coal around Raja and throw that, setting him on fire with a burning rock. At last शंकर और गौरी embrace करते हैं एक दूसरे को और फाइनली एक शांति की जो जीवन है वो आगे व्यतीत करते हैं. बात की जाए प्रोडक्शन की तो जो डेवलपमेंट था फिल्म का, राकेश रोशन got the idea of making Koyla when he was shooting for his another directorial venture and which was delayed since 1992 और फाइनली रिलीज हुआ था 2000 में, जिसका टाइटल था कारोबार द बिजनेस ऑफ लव, जो कि फिल्म एक स्टोरी बताती है सिंपल हार्टेड विलेज गर्ल की हु फॉल्स इन लव with her torturing husband's mute servant and how the mute man takes revenge against his boss. तो वहीं कास्टिंग की बात की जाए तो he approached Sunny Deol for the role of Shankar after watching the latter's action scenes in the 1996 films Jeet, Ghatak
but due to unknown reasons, Sunny Deol rejected the role. Upon his refusal, the role was offered to Shahrukh Khan, who had worked with Roshan in his films that were King Uncle, जो कि 1993 में रिलीज हुई, Karan Arjun in 95. तो वहीं सोनाली बेंद्रे was Roshan's first choice to play the role of Gauri. Later replaced her with Madhuri Dixit. For unknown reasons, the film marked the second collaboration between Khan and Dixit, जो कि फॉलोइंग में थी अंजाम के, after which they also starred in दिल तो पागल है, हम तुम्हारे हैं सनम and देवदास. Filming that principal photography of Koyla began in June. A song of the film Tanhai Tanhai and some of the scenes were shot in Tawang. Other scenes were also filmed in Hyderabad and south areas of. इसी के साथ साथ शूटिंग के दौरान फिल्म का एक काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था घूंघटे में चंदा. खान fractured his leg and the other song of the film देखा तुझे तो was to be therefore excited from the film because of his fracture, but after Khan's leg got fully well, the song was shot. The sound of real pots were used for the background music of Dekha Tujhe To, or scenes of the film was loosely inspired from the 1994 Hollywood film Forrest Gump से. अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का जो नॉमिनेशन था वो मिला था अमरीश पुरी को. ओवरऑल जो कोयला का ग्रॉस रहा था इन इंडिया दैट अराउंड 2.14 करोड़, इन अदर कंट्रीज फॉर अ वर्ल्ड वाइड टोटल 28.05 करोड़ रहा against its 12 crore budget and had a worldwide opening weekend of 5.39 crore. तो वहीं ग्रॉस में था 9.60 करोड़ इन इट्स फर्स्ट वीक. इसी के साथ ओवरसीज में बोला जाए वर्ल्ड वाइड में 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म रही थी 1997 में वर्ल्ड वाइड. तो वहीं इंडिया में इट ओपन ऑन फ्राइडे 18th अप्रैल 1997 में अक्रॉस 275 स्क्रीन्स पर ओपन अप हुई थी और रिकॉर्ड रहा था 4.06 करोड़ का नेट में and shared the record for the highest opening day. The previous record opening Trimurti, which also grossed 1.06 crore on its opening day. काफ़ी अच्छा जो है कलेक्शन रहा है फिल्म का देखा जाए तो वहीं साउंड ट्रैक दैट वॉज तन्हाई तन्हाई वॉज संग बाय अलका याग्निक, उदित नारायण. बदन जुदा होते हैं वॉज संग बाय कुमार सानू, प्रीति सिंह, फाल्गुनी पाठक. देखा तुझे तो वॉज संग बाय कुमार सानू, अलका याग्निक. एंड सासों की माला पे वॉज संग बाय कविता कृष्णमूर्ति, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग रहा है इंडस्ट्री का. भांग के नशे में वॉज संग बाय अलका याग्निक, आदित्य नारायण. घूंघटे में चंदा है वॉज संग बाय उदित नारायण. जो कि देखा तुझे तो सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था अपनी रिलीज़ के बाद. और थीम सॉन्ग जो कि क्रेडिटेड फ्रॉम द मूवी था वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज को लेकर. तो दोस्तों बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की और उनके किरदारों की. शाहरुख खान नज़र आए थे एज शंकर इन द लीड. तो वहीं माधुरी दीक्षित एज गौरी. अमरीश पुरी रहे एज राजा साहब द मेन एंटागोनिस्ट. रंजीत एज दिलावर. सलीम गौज एज ब्रिजवा. दीपशिखा नागपाल एज बिंदिया. अशोक सराफ एज वेदजी. जैक गौर एज रणबीर. सुरेश चटवाल एज गौरीज अंकल. मोनीश बैल एज अशोक.
यानी कि जो गौरी के ब्रदर का किरदार निभा रहे थे, एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। राम मोहन शर्मा एज ओल्ड मैन, कुनिगा एज रसीली, हिमानी शिवपुरी एज चंदाबाई, विकास आनंद एज हरियर, प्रदीप रावत देखे गए पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाते हुए।
दोस्तों बात की जाए 1970s के दौर की तो 1971 में ही एक्टेड इन हाथी मेरे साथी, जो कि काफ़ी हिट फिल्म रही थी, साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है एंड द बिगेस्ट ग्रॉसर एवर टिल देन, where he is credited with giving Salim Khan and Javed Akhtar their first chance to become screenplay writers by offering them work in Hathi Mere Sathi. Javed Akhtar accepted and said in an interview one day he went to Salim Saab and said that Mr. Devar had given him a huge singing amount with which he could complete the payment for his bungalow, जो कि आशीर्वाद है, whereas but the film's script was far from being satisfactory. He told us that if we could write the script, he would make sure we got both money and credit, whereas Rajesh bought Rajendra Kumar's bungalow named Dimple in Carter Road Promenade for 31 लाख in 1970s, तो उसका ही रीनेम करा था जो कि रखा गया था आशीर्वाद. राजेश खन्ना's 15 consecutive solo hit films रही हैं between 1969 to 70, जिसमें कि कुछ फिल्म्स रही जैसे आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, सफ़र, खामोशी, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद एंड हाथी मेरे साथी उनकी सोलो हिट्स रही हैं. तो वहीं 17 कॉन्जिक्यूटिव हिट फिल्म्स रही जिसमें कि लीड हीरो रहे हैं बतौर, जो कि सेम एरा था उनका 1969 to 71, जिसमें कि 15 में तो उन्होंने सोलो हीरो फिल्म्स करी हैं, बल्कि 2 नॉन सोलो हीरो फिल्म्स रही जो कि थी अंदाज और मर्यादा. तो वहीं बदनाम फरिश्ते जो कि 1971 में उनकी अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे, जबकि 72 में ही एक्टेड इन 11 रिलीजेस जिसमें कि तेलुगु फिल्म बंगारू बाबू, दैट ईयर हिज फिल्म्स अमर प्रेम, अपना देश, मेरे जीवन साथी जिन्होंने अर्न करा था मिलकर 5 करोड़. तो वहीं हिज other films of 1972 such as दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम, शहजादा ने काफ़ी अच्छा अर्न करा था, 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा. तो वहीं उनकी कुछ नेक्स्ट रिलीज़ेस रही जैसे कि अनुराग जो कि हिट रही थी. द फिल्म मालिक रिलीज इन द एंड ऑफ 1972 बट अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था तेलुगु मूवी जिसका टाइटल था बंगारू बाबू, डायरेक्टेड बाय वी राजेंद्र प्रसाद इन 1973 एंड ऑल्सो वॉज हिट एट द बॉक्स ऑफिस. बात की जाए जो कि एज पर रिव्यू रहे हैं राजा रानी के, रिटन इन 2014 बाय द हिंदू न्यूज़पेपर, द फिल्म डिड वेल एट बॉक्स ऑफिस and taking into consideration the inflation as of 2014, the film would have grossed more than 100 crores. जो कि अटायर पहना गया था by खन्ना was a sleeveless shirt and trouser, thick leather belt, shoes without socks and a black cap, जिसको द हिंदू रिव्यू ने मेंशन करा on a lesser actor the attire would have fallen flat, but Khanna as a small time thief carries it with characteristic elan. काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया गया एज पर कि मतलब जो उनकी कॉस्ट्यूम थी वो इतना जस्टिस नहीं कर रही थी उनके साथ. Whereas he acted alongside Mumtaz in 8 films and they were neighbors and got along very well, which translated onto the screen. Mumtaz also mentioned that I would pull his leg and tease him about his fan following whenever Rajesh entered a hotel in Madras. There was a queue of 600 girls waiting to see him at midnight.
As a result, even I would get some importance as people would ask for my autograph as well. He was very generous with his associates and would पार्टी अलॉट काफ़ी जनरस नेचर रहा है राजेश खन्ना जी का। तो वहीं बात की जाए उनके पीक की, जो कि करियर का एक पीक टाइम रहा, ही वुड बी मॉब्ड ड्यूरिंग पब्लिक अपीयरेंसेस। फैंस किस्ड हिज कार would be covered with lipstick marks and lined the road, cheering and chanting his name, whereas female fans sent him letters written in their blood. There used to be a line of cars of his producers and hysterical fans outside his bungalow every day. तो वहीं actor Mahmood parodied him in Bombay to Goa, where the driver and conductor of the bus were called Rajesh and Khanna respectively. Even today, he remains the favorite of mimicry artists who copy his trademark style and dialogue delivery. टिल डेट काफ़ी नोन है और काफ़ी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है कॉपीराइट से एक ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया है इंडस्ट्री में। अमर प्रेम की फिल्मिंग के दौरान देयर वॉज अ सीन दैट नीडेड टू बी शॉट एट हावड़ा ब्रिज with a boat carrying Khanna and Sharmila under the bridge. The authorities ruled this scene out as they realized that if the public found that the star would be there, it may create a problems on the bridge and that it might collapse due to the number of people trying to get glimpse of their favorite actor. So when film critic Manojit Lahiri remembers girls married themselves to photographs of Rajesh Khanna. सिर्फ यही नहीं, cutting their fingers and applying the blood as sindoor, and Rajesh was God. There has never been such hysteria. मतलब उनका जो दौर था उस टाइम पे जो लड़कियां थी काफ़ी ज़्यादा पागल हुई रहती थी, उल्टी सीधी हरकतें करती थी, अपने हाथ काट के मांग भरना लाइक एक्टिविटीज़ करी हैं काफ़ी सारी लड़कियों ने, इनसेन एक्टिविटीज़। Other than this, 1973 में BBC also made a documentary on him named as Bombay Superstar. As a part of their Man Alive series, shooting began when he got married and his film Daag का premiere था. In the video, it can be noticed that Khanna was shooting for Aapki Kasam, whereas a textbook prescribed by the Mumbai University contained an essay, The Charisma of Rajesh Khanna. During that, Sharmila Tagore said in an interview the Indian Express that women came out in droves to see Kaka, as they would stand in queues outside the studios to catch a glimpse. They would marry his photographs, they would pull at his clothes. Delhi girls were crazier for him than Mumbai girls. He needed police protection when he was in public. I have never seen anything like this before or since, जैसे उनके कमेंट्स रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनकी को एक्ट्रेसेस रही हैं उन तक के कमेंट्स रहे हैं कि जो दिल्ली गर्ल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी मुंबई से। Many of the musical scores for Rajesh Khanna's film were composed by Lakshmikant Pyarelal, Sachin Dev Burman and R.D. Burman. The trio of Rajesh Khanna, Kishore Kumar and R.D. Burman went on to make number of popular films जिसमें की रही अलग अलग, कटी पतंग, अमर प्रेम, शहजादा, मेरे जवान साथी, अपना देश, आपकी कसम, नमक हराम, अजनबी, महाचोर, कर्म, फिर वही रात, कुदरत, अशांति, अगर तुम ना होते, हम दोनों, आवाज़ उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं जिसमें कि इन तीनों का ट्रायो देखा गया है। Whereas Rajesh Khanna considered Guru Dutt, Meena Kumari and Geeta Bali to be his idols and said in an interview, my inspiration include Dilip Kumar's dedication and intensity
and Raj Kapoor's spontaneity were Devanand's style and Shami Kapoor's rhythm. इसके बाद 1976 to 78 इन 3 सालों में he acted in 7 films that were not commercially successful, but these films includes Mehbooba, बंडल बाज, त्याग, पलकों की छाँव में, नौकरी, चक्रव्यूह, जनता हवलदार, which were directed by Shakti Samanta, Shami Kapoor, Deen Dayal Sharma, Miraj, Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee, and Mahmood Ali, respectively, where Khanna persuaded Samanta to cast his sister-in-law Dimple Kapadia opposite him in Anurodh, whereas films starring Rajesh Khanna and directed Shakti Samanta tended to be commercially successful. तो वहीं महबूबा जो कि एक exception रहा. The change from romantic and social movies to action-oriented multi-stars caused some decline of Khanna's career in terms of box office rating. The declaration of emergency in India had injured the masses, and this helped films having the lead actor revolting against corruption to become successes. तो वहीं actor Joy Mukherjee made Chaliya Babu a suspense thriller in 1977, which became the only successful film of his as a director. And the unexpected success of Chaliya Babu gave a boost to the career of Khanna. However, Khanna continued basically in solo hero, socially sober household meaningful films during this era, और काफ़ी सारी variety of characters play करे हैं उन्होंने films में various genres की. इस phase के दौरान he had box office hits also like महाचोर, भोला भाला, कर्ण, टिंकू, अनुरोध. तो वहीं खन्ना was the first choice of director Raj Kapoor for the lead role in Satyam Shivam Sundaram, but कुछ members थे from the Raj Kapoor camp जो अपोज थे खन्ना के to being in the lead, especially Rishi Kapoor. The role went on to Shashi Kapoor. 80s के दौर में when after the 1978 he starred in films like अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम ना होते, सौतन, जानवर, आशा ज्योति, नया कदम, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ, मैं करूँगा and some more films. तो वहीं डायरेक्टर भारती राजा decided to remake his 1978 Tamil box office hit film Sigappu Rojakal in Hindi with Khanna playing a psychopath. वहीं कमल हसन, who played the same role in Tamil, won South Filmfare Best Actor Award for his portrayal, but the Hindi film Red Rose of 1980 was seen as controversial by traditional and orthodox Hindi moviegoers and was not a commercial success. Tina Muneem and Rajesh Khanna became an on and off screen couple of the 80s with movies such as 50-50, Surag, आखिर क्यों, सौतन, इंसाफ मैं करूँगा, अधिकार, अलग अलग, and Ram Avatar Agnihotri wrote that Tina Muneem showed the first sparks of the dedicated actress she would become in the films such as अलग अलग and अधिकार दोनों ही उन्होंने करी थी राजेश खन्ना के साथ. Whereas his on-screen pairing with
Shabana Azmi, Smita Patel, पद्मिनी कोल्हापुरे एंड पूनम ढिल्लन काफ़ी पॉपुलर पेयर अप रहा है 80s का। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक्टिंग भी करी है, मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने एक्टिंग करी है विद द मराठी हिट फिल्म सच एज सुंदर सतर्कर इन 1981. Kamal Hassan was a close friend of Khanna and starred in Hindi remakes of 3 Tamil films originally starring Kamal, and the Kamal acted in 2 remakes of Khanna's films. Quoted in an interview to narrate how he experienced Khanna's stardom in an accident in 1985, where he probably hadn't been to a public theatre since he became a star. Moreover, he performed in successful multi-starrer films including Rajput, धर्म और कानून, पापी पेट का सवाल है, दिल नादान, घर का चिराग, जमाना. He did 3 movies with Jitendra that were धर्म काटा, निशान and मकसद. तो वहीं 84 की मकसद was the second highest ranked film in terms of box office results, earning gross 8.5 crores in आज का MLA Ram Avatar, where Khanna played the character of corrupt politician. Viewers praised his role in the film. That was in 1985 he produced Alag Alag. Moreover, he worked in films of different genres जैसे कि tragedy film रही बाबू as a rickshaw puller, thriller film Red Rose में as a psychopath, political adventure in Awam, fantasy in Bundalbaz and Janwar, crime in फिर वही रात है and अंगारे, suspense in चक्रव्यूह and इत्तेफाक, कॉमेडी इन जोरू का गुलाम, बावर्ची, हम दोनों एंड मास्टर जी, एक्शन इन अशांति एंड ज़माना, फैमिली ड्रामाज एड्रेसिंग डिफरेंट इश्यूज इन आंचल, अमृत, अगर तुम न होते, एंड फिल्म्स एड्रेसिंग इश्यूज इन सोशल कंसर्न्स दैट वर अवतार, नया कदम, आखिर क्यों. काफ़ी उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनाए हैं, हर जेनर में उन्होंने अपने टाइम पे काम किया है और बखूबी हर किरदार को भी निभाया है. Moreover than this, actors who went part of the cast of most of his films include Madhuri Puri, Ashok Kumar, Sujit Kumar, Prem Chopra, Azrani, Bindu, Vijay Arora, Rupesh Kumar, Deena Pathak and A.K. Hangal, who remained part of his working team from the start until the late 80s. The lyricist whom he preferred for his movies was Anand Bakshi. तो वहीं फिल्म्स बाय शक्ति समांता विद खन्ना जो कि लीड में रही, तो वहीं म्यूजिक बाय पंचम एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी हैड पीपल्स वनिंग. The films Samantha directed without Khanna in the 80s were duds, whereas his other close friends from the film industry include Raj Babbar, J. Om Prakash, Prem Chopra, D. Rama Naidu and Jiten. तो वहीं celebrities of the post-2000 era like Madhur Bhandarkar say that they take at least 3 or 4 turns in Carter Road at that time just to see Khanna. Moreover, actor Irfan Khan stated in an interview the kind of craze witnessed by Rajesh Khanna has not been duplicated by anyone. He was the biggest and the most real star Bollywood has produced. I would say stardom is that feeling of being possessed by your idol. You are so overwhelmed with euphoria, you lose touch with reality. काफ़ी नाम रहा है, हालांकि एट प्रेजेंट जो एक्टर्स हैं वो तक राजेश खन्ना जी को अपना आइडल मानते हैं.
90s और 80s के दौर में। मोर ओवर 80s का दौर जो था काफ़ी उनका नोन और मोर ओवर सक्सेसफुल देखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर तो हैं ही, इसी के साथ साथ अपने पीछे एक लीगेसी भी छोड़कर गए हैं। जस्ट एज द पीएम जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल lamented the passing away of the actor. In a press release, she said, I am saddened to learn about the passing away of Rajesh Khanna in his prime. As an actor, he was a heartthrob of the young generation of 70s who tried to model themselves on him and his style. Many celebrities who paid homage to him after his death. His prayer meeting organized in a grand way at the Taj Lands and Hotel in Bandra, Mumbai on 21st July 2012 was attended by many. सिर्फ यही नहीं, काफ़ी celebrities who paid homage to him at his house after his death, जिसमें कि सारे ही ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री के किरदार देखे गए, जस्ट लाइक मनोज कुमार, रंजीत, जितेंद्र, राकेश रोशन, रणधीर कपूर, आशा पारेख, यश चोपड़ा, ऋषि कपूर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, गोविंदा, सलमान खान, हेमा मालिनी, राम कपूर, महेश ठाकुर, हिमेश रेशमिया, साजिद खान, and his prayer meeting organized in a grand way at the Taj Lands and Hotel in Bandra, Mumbai, जिसमें कि नजर आए रीना रॉय, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लन, नीतू कपूर, जया बच्चन, किरण राव, रणबीर कपूर, शक्ति कपूर, शशि कपूर and some more. सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी एक पोस्टेज भी रिलीज़ करी गई थी बाय द इंडिया पोस्ट, जिसमें कि फीचरिंग खन्ना रहे हैं ऑन 3 मई 2013 को। ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ राजेश खन्ना वॉज अनवेल्ड एट बांद्रा बैंडस्टैंड, मुंबई में। चौक जो कि एक इंटरसेक्शन है इन गिरगांव हैज़ बीन नेम्ड सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक इन हिज मेमोरी। तो वहीं पार्क एट लाजपत नगर, न्यू दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड एज सुपरस्टार राजेश खन्ना पार्क इन हिज मेमोरी। अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की बात की जाए तो ही वॉन 7 ऑल इंडिया क्रिटिक एसोसिएशन बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एंड रिसीव्ड 10 nominations. Also won 4 Best Actor awards in the Bengali Film Journalist Association Award and received 25 nominations. 3 Filmfare Best Actor Award and 1 Filmfare Special Guest Actor Award in 1973 and received a Filmfare Special Award in 1991 after 25 years in the Hindi film industry, whereas received the Filmfare Lifetime Achievement Award at the 50th anniversary of Filmfare Awards ceremony in 2005 and also the recipient of IFA Lifetime Achievement Award in 2009. अपने करियर में जो कि उन्होंने पूरा अपना करियर दिया था फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने काफ़ी जो है एक लीगेसी भी छोड़ी है अपने साथ साथ। मोर ओवर काफ़ी नंबर ऑफ यानी कि काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम लिए हैं। बात की जाए फिल्म के अगले किरदार अक्षय खन्ना की यानी कि रोहन बलराज की, जो कि एक एक्टर हैं who appeared in Hindi films and he is the son of late Indian actor Vinod Khanna. He has also won numerous awards in his career, जिसमें कि Filmfare, Screen Awards and IFA Awards हैं, काफ़ी वेरियस कैटेगरी में।
जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स सच एज आफ्टर स्टडीइंग इन किशोर नामित Kapoor Acting Institute in Mumbai. He made his acting debut in 1997 with the film Himalaya Putra. His next release was Border in 1997, जो कि emerged हुई थी as a critical and commercial success, earning him the Filmfare Best Debut Award and a nomination for Filmfare Award for Best Supporting Actor, where he rose to prominence with starring roles in the musical romantic drama films like Tal in 1999, comedy film like Dil Chahta Hai in 2001, which won him a Filmfare Award for Best Supporting Actor, whereas the romantic thriller Hamraz of 2002, जिसके लिए नॉमिनेट करे गए थे बेस्ट नेगेटिव रोल कैटेगरी के लिए, and the romantic comedies Hangama and the Halchal of 2004, the murder mystery 36 Chinatown in 2006, and the action thriller Race in 8, and the heist comedy Tismar Khan in 2010. He has also acted in 2010 comedy movie No Problem, and he continued to draw praise for her performances in the 1999 romance film The Hick, the 2002 psychological thriller Divangi, और 2007 में biographical drama Gandhi, My Father, and the 2010 action thriller film Akrosh. Following a 4-year hiatus since his last release, Gali Gali Chor Hai, in 2012, Khanna made his comeback with an antagonistic appearance in the action comedy film Dishoom and appeared as an investigative cop in two thriller releases of 2017, the crime film Mom and the murder mystery Ittifaq. दोस्तों जानेंगे उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जस्ट एज की डेब्यू, करियर स्ट्रगल और ब्रेक थ्रू पीरियड रहा उनका 1997 टू 1999, वेयर एज जिसमें कि उन्होंने डेब्यू करा था एक्टिंग करियर में विद पंकज पराशर्स रोमांटिक ड्रामा मूवी हिमालय पुत्र से, जिसमें कि को स्टारिंग रहे थे उनके फादर विनोद खन्ना अलॉन्ग विद हेमा मालिनी, सतीश शाह, जॉनी लिवर, डेनी डेंजोंगपा एंड अमरीश पुरी, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस ने अर्न करा था उनके लिए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू, बट द फिल्म अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस बावजूद पॉजिटिव रिव्यूज़ के. Later that year, Khanna starred in J.P. Datta's war drama Border alongside Sunny Deol, Sunil Shetty and Jackie Shroff, set during the Indo-Pakistan War of 1971. The film was about the events of the Battle of Longwala and saw Khanna play the real-life role of Dharamveer Singh Maan, a commander who is also a part of the battle. So my film generated positive reviews and eventually proved to be the second highest grossing Bollywood film of 1997. तो वहीं बॉर्डर won 4 Filmfare Awards, जिसमें कि रहा Best Male Debut Trophy for Khanna. He was also nominated for Best Supporting Actor at the same ceremony. उनकी final release of 1997 was a romance film Mohabbat, in which he starred alongside Madhuri Dixit and Sanjay Kapoor, whereas the film received a negative critical reception and was commercially unsuccessful. Following years में Khanna starred opposite Jyotika and Priyadarshan's romantic drama film डोली सजा के रखना in 1998, जिसमें कि पोर्ट्रे करा था एक रिच पर्सन का who falls in love with ज्योतिका's कैरेक्टर. सिर्फ यही नहीं बल्कि ही स्टार्ट उनकी कुछ
स्टार रहे अपोजिट ऐश्वर्या राय एंड अनिल कपूर इन सुभाष घई's म्यूजिकल लव ट्रायंगल फिल्म ताल, in which he played मानव मेहता, जो कि एक सन है of a wealthy rich man who falls in love with a poor aspiring singer। फिल्म जो है हाईली एंटिसिपेटेड रही थी क्रिटिक्स की तरफ से और प्रूव हुई थी टू बी द थर्ड हाईएस्ट अर्निंग फीचर फिल्म of 1999, becoming his first commercial success since Border। तो वहीं फाइनल फिल्म उस साल की was लतीफ बिनू's star-crossed romance The Hick, in which he featured opposite Sonali Bendre as a Hindu boy who falls in love with a Muslim girl। The role was played by Sonali Bendre। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखी गई है। क्रिटिकल रिकॉग्निशन उन्हें मिली थी 2000 में, यानी कि 2001 और 2 में उन्हें मिला क्रिटिकल रिकॉग्निशन, जिसमें कि उन्होंने ब्रेक लिया था, यानी कि 2 साल तक एब्सेंस में रहे फ्रॉम द फुल टाइम एक्टिंग एंड अपीयर्ड इन फरहान अख्तर्स कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है in 2001 alongside Saif Ali Khan and Amir Khan। Set in Mumbai, it focuses on a major period of transition in the lives of 3 young friends, where Khanna featured as one of the friends named Siddharth Sinha, जो कि एक क्वाइट और रेटिसेंट बॉय था। तो वहीं अब्बास मस्तान रोमांटिक थ्रिलर मूवी हमराज इन 2002 co-starring Bobby Deol and Amisha Patel was Khanna's next film release, and he played the main antagonist Karan Malhotra, a convincing con artist whose girlfriend played by Patel marries a rich man जिसका किरदार निभाया था देओल ने to secure his wealth। तो वहीं बात की जाए प्रेज़ की, तो उनकी परफॉर्मेंस ने रिसीव करा था काफ़ी क्रिटिकल प्रेज़ एंड ही वॉन द आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल एंड नॉमिनेशंस फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल ऑल्सो फॉर द फिल्म हमराज। And that year, he also starred as a lawyer in Anis Bazmi's thriller movie Diwangi alongside Ajay Devgan and Urmila Matondkar, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस रही है, जिसमें कि नॉमिनेट हुए थे फॉर द स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर।